Slide. Okay, good evening. Namaskar, Rishi. Yes, Ashish, Harsh, Jainam, Afzal, Varsha, Usman. Good evening, beta. Good evening. I hope, beta, the audio. Okay, yeah, I hope the audio and video is like perfectly fine. Kiran, beta, good evening. Good evening, Usman. I'm very much fine, beta. I hope the audio and visuals are perfectly fine, beta. Just give me a thumbs up. Yes. डिफॉल्टर इज आस्किंग कि कैसे हो सर, अलमाटी कब जा रहे हो? और जय हिंद बेटा। अलमाटी देखते हैं बेटा कब जाएंगे, कब बुलाते हैं। I am from Iraq, beta. Adil, yeah, good evening, good evening. I hope the audio and visuals are perfectly fine. So let us start with a very important topic that you all have studied in class 11th. So yeah, exactly it will be the same, but yeah, it will be an updated version, beta. It will be an updated version. We will be discussing it clinically. Okay, we will be discussing it clinically, beta. So yes, yeah, we will be discussing it clinically and yeah, with conceptual okay, with conceptual yeah, knowledge. So let us start with the concept and significance. So before starting, I want thumbs up from each one of you, beta, that you are ready with your notes, your pens, pencils, color pens. Yes, everyone is ready. Proper concentration है सबका. फटाफट से एक thumbs up दे दो chat box में. ठीक है. जय नाम, very good. हर्ष, very good, beta. Very good, Harsh. Chal. Usman, very good. Varsha, very good. Please prepare the notes along with me, beta. Notes लिखते जाइए. That means you will be ready when I will come for offline sessions, right? So yes, double, triple revision हो जाएगी. चल, very good. चलो, let us now start with the concept and significance, beta. So why there is a need of glycolysis, beta? So सबसे पहले हम समझते हैं glycolysis का मतलब क्या होता है. What is meant by glycolysis? You already know, beta. Glycolysis. Okay, it okay. Glycol Glycolysis. Okay, you already know glyco word has come like from the word glycics. Okay, it means glycics, and remember, beta, this glycis is nothing but sugar. Okay, it's nothing but sugar, or I can say glucose. It is nothing but sugar, or I can say glucose. Now, when I say lysis, beta, lysis means breakdown. Lysis means breakdown. So, glucose is broken down to form energy, okay, to release or to liberate energy, to liberate energy. And that is something which is called as glycolysis. That is something which is called as glycolysis, beta. Okay, so yes, remember, beta, glycolysis, breakdown of glucose to liberate energy. Now, what is the concept behind this, beta? What is the concept? Why body needs glycolysis? Why body needs glycolysis? चलो reactions तो पढ़ लेंगे, but उससे पहले concept भी तो पता चले. Why there is a need of glycolysis in the body? So remember, beta, that glucose, okay, you already know from the glucose, if we talk about the aerobic glycolysis, the glucose will be converted into pyruvate. The glucose will be converted into pyruvate. Yesterday only I have told you that the glucose is a 6 carbon compound and pyruvate it is a 3 carbon compound. So two molecules of pyruvate will be formed because no molecule of carbon is lost in this reaction. Now remember, beta, glycolysis is something, is a process which is taking place in all organs. Okay, it is taking place in all organs of the body, all organs of the body, and it is taking place in the well fed state. It is taking place in the well fed state. Well fed state क्या होता है बेटा? Generally 1 to 4 hours after food. Okay, 1 to 4 hours after food. जब आपने तुरंत खाना खाया बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं वेल फेड स्टेट. ओके, फेड, खाना खाना. ओके, वेल फेड स्टेट बेटा. ओके, नाउ यू ऑलरेडी नो कि फॉर एग्जांपल आपने 1 लीटर ऑफ, ओके,
कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली है, ठीक है, 1 liter of any cold drink, okay, or anything that is rich in carbohydrates you have consumed in your body. So I can say that the body, it is in a well fed state. Okay, well fed state, it means that body के अंदर, okay, body के अंदर basically the glucose levels are very much high. The glucose levels are high. Okay, the glucose levels are high. So remember beta, the glucose levels when they are high, okay, now this glucose needs to be broken down, needs to be broken down, okay, broken down to release energy, to release energy. Now, my question to each one of you, those like those students who are listening my lecture, beta, under influence of which hormone, okay, this extra glucose will be pushed inside the cells. Okay, under influence of which hormone this extra glucose will be pushed inside the cells. For example, I have already taken an example yesterday itself. Yes, you already know. Yeah, I want the answers from each one of you. कौन से हार्मोन की वजह से, okay, yeah, the extra glucose will be pushed inside the cell. Yes, Afzal, very good. Jainam, defaulter, Harsh, very good, very good. Yes, Kiran, very good. Now beta, for example, let us suppose this is blood. Okay, this is blood vessel. Now this blood vessel, vessel का मतलब है arteries या veins कुछ भी हैं, ठीक है, और you already know we have cell, we have cell, right? Now after digestion, the glucose levels will be high in the blood. The glucose levels will be high in the blood. For example, if I say 100 molecules of glucose, now out of 100 glucose, for example, the cell has a capacity of at the most consuming 50 glucose at a time. How many are left after the cell passively consumes 50 glucose? Then automatically 50 glucose will be left. 50 glucose will be left. Now these 50 glucose will influence the, okay, beta cells of pancreas. Yes, this extra glucose will influence the beta cells of pancreas to release insulin. Now this insulin will force the cell, okay, to consume this extra 50 glucose, because blood में glucose नहीं रहना चाहिए, blood in the blood glucose shouldn't be there, right? And that is the reason why, like after drinking 1 liter of cold drink also, we are not suffering from diabetes, because we have a hormone, that is insulin, which is targeting the cell, okay, to consume the extra glucose. And this extra glucose, and this glucose is utilized, okay, it is broken down to give energy, it is broken down to give energy. Yes, everyone is right. Usman Rajvardhan, very good beta. So yes, remember beta, that under the influence of insulin, under influence of insulin, remember, glycolysis takes place. Glycolysis takes place, and remember, it is taking place in all cells, okay, and this glycolysis can operate aerobically. I have already told you, in presence of oxygen, okay, in presence of oxygen, or anaerobically, anaerobically, that is in absence of oxygen, in absence of oxygen. तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों को? फटाफट से थम्स अप दो, क्या ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ सब लोगों को? जस्ट गिव मी अ थम्स अप बेटा इफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज क्लियर. हाँ, जयनाम, हर्ष, वेरी गुड. आशीष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ बेटा, अगेन I want to ask everyone, what is the shape of the RBCs? Chalo, clinically, why this glycolysis is important? Let us understand, taking one more example, that is erythrocytes. What is the shape of the adult, okay, erythrocyte, mature erythrocyte? चलो फटाफट से बताओ चैट बॉक्स के अंदर, व्हाट इज द शेप ऑफ द मैच्योर
एरिथ्रोसाइट, ये तो बहुत बेसिक, यस कृति वेरी गुड, इट इज बाइकनकेव, इट इज बाइकनकेव, इट इज बाइकनकेव, ओके, इट इज बाइकनकेव डिस्क शेप्ड, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उस्मान शुभांगी वेरी गुड बेटा, कृति वेरी गुड बेटा, चलो जयनाम किरण कवीन बेटा वेरी गुड बेटा, perfect perfect. Now beta you already know erythrocytes, okay, erythrocytes, okay, they don't have nucleus, okay, you already know the mature erythrocytes, they don't have nucleus. In the stages of development of erythrocyte there is pycnosis. Pycnosis means loss of nucleus, right? And remember beta, these erythrocytes, they don't have mitochondria also, they don't have mitochondria also, right? They don't have mitochondria also, yes, they don't have mitochondria also. So you are very well aware. Anatomy sessions, David, I have already, yeah, informed you that I will take these sessions tomorrow, right? I will take these sessions tomorrow. Yeah, I will take these sessions tomorrow. Yeah. So, yes. Now, these erythrocytes, basically they depend only on glucose. Okay, they depend only on glucose. Okay, and if there is any defect, if there is any defect in glycolytic enzymes. Now, when I say glycolytic beta, glyco means glucose, lytic means breakdown. Glucose को break down करने वाले जो enzymes है, we will learn in the process. If these enzymes are okay, if these enzymes are defective or they are absent, okay, then it can cause hemolysis. अब मुझे फटाफट से बताओ hemolysis का मतलब क्या होता है? hemolysis का मतलब क्या होता है चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ. Yes, David, I'm covering whole syllabus abdomen. I have already done 2022 lectures in on the YouTube. They are already there. I'm going to start with lower limb tomorrow. And yes, I'm taking sessions daily, morning and evening. From last 2 days, I'm not able to take the session in the morning due to my health issues. Otherwise, yeah. Breakdown of hemoglobin. हाँ, breakdown of RBC और hemoglobin बिल्कुल ठीक है. आरबीसी की मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो हीमोग्लोबिन विल फ्लो आउट, ऑब्वियसली बात है. सो दैट इज समथिंग, या एवरीवन इज राइट बेटा. उस्मान, कृति, शुभांगी, अफसल, राजवर्धन, किरण, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. So remember that is again a need where no you need glycolysis. Okay, you need glycolysis for erythrocytes because erythrocytes, yeah, yeah, this glycolysis is taking place because erythrocytes is only dependent on glucose for its need, right? Now, if we talk about skeletal muscles beta, okay, तो में से सब लोग जिम जाते हो, you already know that you guys all go to gym, right? Okay, skeletal muscles. Now you already know there is low blood flow, okay, whenever you do beta heavy exercise, whenever you do heavy exercise, yes Ramesh, you are right, whenever you do heavy exercise beta, what happens? Okay, there will be low blood flow, right? Always, especially during the exercise, heavy exercise, right? Now, whenever there is a low blood flow, or I can say ischemia. Now, ischemia is low blood supply to any organ or tissue. Okay, ischemia, it is basically means low blood supply, low or less blood supply, low or less blood supply, okay, to any organ or tissue. For example, पहले blood पूरा का पूरा जा रहा था, अब blood, it is going very less in very small amount. Okay, that is something called as ischemia. Okay, so in this case beta, if there is low blood supply, तो obviously बात है ऑक्सीजन कम जाएगा. So what will happen beta?
Even after this low blood supply, the skeletal muscles will not die. The skeletal muscles will not die, right? It will not die. Why? They will survive ischemia beta, and the reason behind it, okay, it is glycolysis, okay, because yeah, glycolysis is taking place over there, okay. So yes, even if there is, okay, if there is deficiency of glycolytic enzymes, deficiency of glycolytic enzymes in skeletal muscles beta, then the muscles will become fatigue. The muscles will become fatigue. Now, that is something that you have to remember, beta. Normally, the muscles are not becoming fatigue, even if you are doing high amount of exercise, right? The skeletal muscles have the tendency, because these muscle cells, they by the process of glycolysis, ATP is liberated, okay, oxygen is, so even if there is like low blood supply, it has high susceptibility, okay. So yes, glycolysis will take place in these cells, and they have the potential to survive ischemia even during high exercise, and that is all due to glycolysis. All due to glycolysis, because energy is being maintained. So that is why beta, that is why the simple concept that I wanted to tell you, yeah, about the glycolysis. Okay, why glycolysis is essential. Okay, why glycolysis is essential. अगर बॉडी में ग्लूकोज है और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा टू लिबरेट एनर्जी, राइट? और यस, दैट इज द नीड. सो आई होप इट्स क्लियर द कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस. बेटा फटाफट से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स के अंदर इफ इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. इफ इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू, फटाफट से एक थम्स अप दे दो. यस, आशीष लोहार वेरी गुड, कृति वेरी गुड, यस, हर्ष, जयनम वेरी गुड, किरण वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. चलिए, let us start. Yeah, let us start, beta. Remember, the glycolysis, it is taking place in all organs of the body. Okay, it is taking place in all organs of the body. Yes. Now beta, tell me which cell organelle it will take place. कल ही बताया था मैंने आप लोगों को. Which cell organelle it will take place? शुभांगी very good बेटा. Which cell organelle it will take place? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स के अंदर. चलो आंसर बताओ चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से. विच सेल ऑर्गेनल? कल मैंने बताया तुम लोगों को एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस. सेल के कौन से पार्ट में हो रही है बेटा? मैं सेल ऑर्गेनल पूछ रहा हूं, ऑर्गन नहीं पूछ रहा जय नाम. और लिवर में भी होता है, मैं बोल रहा हूं सारे ऑर्गन्स में होता है. एक आंसर करता है, बाकी सब एक जैसा आंसर करने लगते हैं. साइटोप्लाज्म बेटा, ऑर्गेनल तो साइटोप्लाज्म होगा, मैंने ऑर्गन थोड़ी पूछा है. हॉरिबल, हॉरिबल. बेटा रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट, या मैंने कल ही बताया था, जब ग्लूकोज इट इज एंटरिंग इनसाइड द सेल, cell, it can be cell of liver, it can be cell of lungs, it can be cells of kidneys, it can be cells of brains, any cell, okay. Cell, inside the cell, what is their cytoplasm, and in the cytoplasm this glycolysis will take place. Glucose will be broken down to form, yeah बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता बेटा, या तो उसको साइट लिख लो, ठीक है, ठीक है, अप टू यू. अप टू यू, या तो उसको साइट लिख लो या साइटोसोल लिख लो. ऑर्गेनल नहीं है, हाँ ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया मत बोलो. अगर थोड़ा सा वो लिखा हुआ है तो प्लीज यूज योर ब्रेन्स एज वेल बेटा. माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ठीक है. चलो ओवरव्यू देख लो बेटा ग्लाइकोलाइसिस का. यू ऑलरेडी नो बेटा, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. Okay, I have already told you glucose is a 6 carbon compound, right? Now this glucose will be broken down to form pyruvate. This glucose will be broken down to form pyruvate, that is a 3 carbon compound, that is a 3 carbon compound, right? And from one glucose
From one glucose, how many pyruvate will be formed? Two pyruvate. I will be teaching all the steps in detail. I will be teaching all the steps in detail. So no need to worry, beta. So remember, beta, this pyruvate, okay, will enter into, you already know, it will enter into the mitochondria. Okay, it will enter into the mitochondria, and this pyruvate will be converted into acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A, right? In presence of oxygen. Okay, in presence of oxygen, right? So this step from glucose to pyruvate till now, okay, from glucose to pyruvate, this is aerobic glycolysis. Aerobic glycolysis that we will be discussing in detail. That we will be discussing in detail. Okay, that we will be discussing in detail, right? So remember, beta, if we talk about steps, yes, बेटा ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होती है, that is in the cytoplasm. Okay, after pyruvate is formed, after the glycolysis is ended, this pyruvate, the molecule which is obtained after the breakdown of complete glucose, it will enter into the mitochondria to form acetyl coenzyme A that will further undergo Krebs cycle. Right? अगर मैं पूछूं Krebs cycle कहाँ हो रही है, so that will be inside mitochondria. But when I say glycolysis, it is outside mitochondria. It is cytoplasm. It is cytoplasm. Is this concept clear, beta? Already I have spoken this yesterday in the class itself, right? Sure. I hope it's clear to you. Yeah. Okay. Now, beta, there are two steps of glycolysis. Majorly, we have two steps of glycolysis. The first one, beta, it is the preparatory phase. Okay. And the second one, beta, it is called as the payoff phase. Payoff phase. We have the preparatory phase and we have the payoff phase. Now, beta, in the preparatory phase, basically, we are preparing glucose. Okay, we are preparing glucose for making more ATP. क्योंकि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एटीपी बनेगा. So we are preparing the glucose for making more ATP in future. So here beta ATP is used. Okay, here ATP is used. That is something very very important. ATP बाद में बनाने के लिए पहले ATP को यूज करेंगे ताकि ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सके. ठीक है. And this preparatory phase, it is having two stages. Stage of phosphorylation, and we have stage of splitting. Okay, we have stage of phosphorylation and stage of splitting. I will be dealing with all the phases in detail. No need to worry, beta. Payoff phase. Payoff करना मतलब ATP generate करना. To generate the ATP, the ATP is generated. The ATP is generated. Remember, over here you will see oxidation and reduction phase. It is also called as the oxidation and reduction phase, okay, where the ATP will be generated. So, keeping this particular information in mind, let us start with the reaction beta. Let us start with the reaction. Reaction करोगे तो समझ में आएगा. ठीक है. रिएक्शन करोगे तो समझ में आएगा, तो और अच्छे से क्लियर होगा. So let us start. और यहां से बिल्कुल ध्यान से सुनना, because I will be explaining only once, and please try to like focus better. Now the very first step that we are going to discuss, it is stage of phosphorylation.
Okay, stage of phosphorylation. Now when I say beta phosphorylation, phosphorylation का मतलब होता है phosphate ऐड करना. phosphorylation का सिंपल मीनिंग होता है टू ऐड phosphate. अच्छा, phosphorylation simply means to add phosphate. ठीक है, to add phosphate, PO4 phosphate, right? PO4 phosphate. I'm not concerned about the like structural formulas. Okay, so let us now discuss the steps better. You already know we are starting with the glucose. Okay, you already know. For example, this is the cell. Okay, this is the cell, and the glucose has entered inside the cell. Okay, the glucose has entered inside the cell, okay, in the cytoplasm, with the help of GLUT transporter, with the help of GLUT transporter, okay, with the help of GLUT transporter. Okay, now it is GLUT1 transporter beta because it is widely distributed, and GLUT1 is bidirectional. अगर ग्लूकोज अंदर गया है सेल में तो it can come out also. Okay, it can come out also. So remember that GLUT1 beta, it is bidirectional. Okay, it is bidirectional. I will ask everyone to know rotate your notebooks, okay, because this will be a very long cycle, okay, and I will be dealing all the current aspects here only. Okay, so just rotate your notebook and start writing all the reactions one side and all the explanation on the other hand. So it will be like convenient for you कि एक ही पेज में आ जाएगा. I will be changing the slides, but yeah, because I will be teaching very like, yeah, all the things over here. Okay, so yes. Now glucose, you already know glucose is a 6 carbon compound beta. You already know the molecular formula for glucose. It is C6H12O6. How many carbons are there beta? 6 carbon is there. 6 carbon is there. तो चलो ठीक है, 6 कार्बन बना लेते हैं. Now, the first step beta, the first step, it is stage of phosphorylation. It is stage of phosphorylation. So what will happen beta? What will happen? Yeah, we will add phosphate. We will add phosphate. Now beta phosphate आएगा कहां से? मैंने अभी तुमको बताया कि ATP is used over here. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एटीपी को यूज करेंगे. सो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो व्हाट विल हैपन बेटा ओवर हियर? व्हाट विल हैपन ओवर हियर? रिमेंबर दैट द एटीपी, ओके, द एटीपी will be broken down. The ATP, okay, the adenosine triphosphate will be broken down to form adenosine diphosphate. Adenosine diphosphate. So obviously बात है, ट्राइफॉस्फेट से क्या बन गया? डाइफॉस्फेट. So one phosphate is lost from ATP. One phosphate is lost from ATP. So yes, this phosphate will come and attach to the glucose. जो एक phosphate lost हुआ है ATP से, it will come and attach to glucose and it will become glucose 6 phosphate. It will become glucose 6 phosphate. Now when I say glucose 6 phosphate beta, it simply indicates that we have 6 carbons in the glucose. Okay, we have 6 carbons in the glucose, and at the 6th carbon phosphate is added, and at the 6th carbon phosphate is added. So yes, yes. So remember beta, yeah, remember beta, from like ATP, one phosphate it is transferred to glucose. Okay, from ATP one phosphate, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, अब वो क्या बन गया? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. ट्राई और डाई, तो एक फॉस्फेट लॉस्ट हो गया, तो वो एक फॉस्फेट कहाँ आ गया? ग्लूकोज के साथ. सो दैट इज ग्लूकोज 6 phosphate.
Okay, and the enzyme which is responsible for transfer of phosphate group, that is called as hexokinase. Okay, hexokinase, yeah, and glucokinase. I will tell you the difference between both these enzymes, but they have the same function over here. They have the same function, beta. Hexokinase or glucokinase ka function, if you want to write, you can write it over here that yes, they help in the transfer. कहीं पर भी बेटा kinase लगता है ना, कहीं पर भी kinase लगेगा. Remember beta, it it is an enzyme which helps in the transfer of phosphate group, transfer of phosphate group from one molecule to another. तो मैंने enzymes नहीं कराया, but I'm telling you the basics over here only. From one molecule to another, from one molecule to another. Yes, Kriti, Dr. Kirti, very good. From one molecule to another. Now now अब वन मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा? एटीपी. एटीपी के अंदर फॉस्फेट था, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा आ गया हमारा यहाँ पे? In this case we have glucose. In this case we have glucose. So is this step clear? And beta, remember, this enzyme basically needs an ion, and that ion, it is Mg2 plus. Okay, that ion is Mg2 plus. Magnesium 2 plus is needed for the working of this particular enzyme. Yes, that is Mg2 plus. Is this clear beta? Now इज दिस क्लियर? फटाफट से थम्स अप तो जल्दी से कि पहला स्टेप समझ में आया है, कि पहला स्टेप क्लियर हो गया. यस जयनाम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड जयनाम, कि पहला स्टेप क्लियर हो गया है. ठीक है डॉक्टर कीर्ति, वेरी गुड बेटा, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर. नाउ बेटा, we are breaking down glucose and we are using ATP. So when we are using ATP, beta, it clearly indicates, okay, if we are using ATP, so remember beta, the cell is using energy. Cell is using energy to trap glucose inside the cell. To trap glucose inside the cell. You already know beta, GLUT1, it is bidirectional. तो ग्लूकोज बाहर भी तो जा सकता है. So when the cell, it is using ATP, it clearly indicates now this glucose cannot go out. So cell, it is using energy to trap the glucose inside the cell. To trap the glucose inside the cell. So yes, stage of phosphorylation beta, it simply means it traps the glucose. Okay, it traps the glucose for cellular metabolism. Okay, it traps the glucose for cellular metabolism. Okay, now I want answers beta in the chat box. How many ATPs are utilized in this reaction? How many ATP is utilized from the like glucose getting converted to glucose 6 phosphate? How many ATP is required? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ. How many ATP I have used? बिल्कुल क्लियर है हर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. Yes, it is. Yeah, Usman, very good. Jainam, Afsal, medical information. Ashish, Kiran, Kriti, very good, beta. It is, remember, in the first reaction, 1 ATP is required. 1 ATP is required. My second question, beta. Is this reversible? Is this reversible or irreversible reaction? Is this reversible or irreversible reaction? Is this reversible or irreversible reaction, beta? Reversible? No beta, it's not reversible, it is irreversible. You are using ATP over here, you are using ATP over here. Yes, so it is an irreversible reaction, or I can say the first
irreversible step. The first irreversible step. Yes, yes, it is the flux generating step or the regulatory step of glycolysis or the regulatory step of glycolysis. So from glucose, we have glucose 6 phosphate. That is the first step. Okay, that is the first step. Now coming on to the second step. Coming on to the second step. Now this glucose 6 phosphate. Now this glucose 6 phosphate will change into fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate. Fructose 6 phosphate. Now बेटा you already know fructose का भी molecular formula क्या होता है C6H12O6. ग्लूकोज का भी molecular formula क्या है C6H12O6. Now there is a change in the structure. Molecular formula is same. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं anyone can tell me the enzyme which will be used? Okay, same formula with different structure, what this is called as beta? Same formula with different structure. फटाफट से बताओ. Yes, what it will be called as beta? Yes, Dr. Kirti, very good beta. It is isomers. It is isomers. क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज C6H12O6. फ्रक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज C6H12O6. So you are very well aware beta, this is a case of isomers. So over here the enzyme which will be used beta, the enzyme which will be used over here, it will be isomerase. It will be isomerase, right? It will be isomerase, right? And since phosphate is added to 6 carbon compound, तो phosphate के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉस्फो, ओके, और 6 कार्बन के लिए हेक्सोस. So the enzyme over here it will be phosphohexose isomerase. Phosphohexose isomerase. Beta gluco या hexose. Okay. So better one it is hexose over here. Yeah, it is phosphohexose isomerase. तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, कोई अंतर नहीं है. इट इज लाइक 6 कार्बन्स. इट इज लाइक 6 कार्बन्स हैविंग फ्रक्टोज, sorry, phosphate at the 6th carbon. So remember beta, this is the second step. This is the second step. So this glucose 6 phosphate has many other fates. Okay, this glucose 6 phosphate can be, it can go to HMP pathway, hexose monophosphate pathway. Okay, now this glucose 6 phosphate can go to uronic pathway. We will discuss all these pathways. Okay, it can be go and like it can synthesize glycogen, so it can be used in glycogen synthesis also. But what we are discussing, we are discussing glycolysis. So this glucose 6 phosphate, if I have to commit it, अगर इसको मुझे कमिटमेंट देनी है कि ये ग्लाइकोलिसिस ही करे, बाकी सब पाथवेज में ना जाए, so what I have to do, I have to change this glucose 6 phosphate to fructose 6 phosphate. So yes, so that is why it is called as the committed step. Okay, now glucose is getting committed. Okay, it is getting committed. It is getting committed for cellular metabolism. Cellular metabolism. Otherwise, this can go for glycogen synthesis also. So for any glucose which has to go and synthesize ATP, so that is a very, very important step. That is a very, very important step. And remember beta that this is a reversible step. Okay, this is a reversible step. Okay, this is reversible step. This is a reversible step. Yes, this is a reversible step. Okay. So I hope these two steps are clear. Just give me a thumbs up in the chat box, Peter. Just give me a thumbs up if these two steps are clear to each one of you. जल्दी से thumbs up दे दो फटाफट से.
चल, जयनाम वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हर्ष वेरी गुड वेरी गुड, यस। शुभांगी, आशीष वेरी गुड बेटा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हम्म, किरण, राजवी, डॉक्टर कीर्ति, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट बेटा। अब बेटा आई विल कंटिन्यू, ओके, आई विल कंटिन्यू विद द same. Yeah, I will continue with the same. I am taking it on the next slide beta. I am taking on it on the next slide, so please kindly continue in the same line, right? Continue in the same line. आज समझो क्या हो रहा है, ग्लूकोज से क्या बन गया। चलो, ये चीज तो अब तुम लोग को क्लियर हो गई है सबको कि यस, यू आर वेरी वेल अवेयर कि ग्लूकोज से क्या बन चुका है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन चुका है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, fructose 6 phosphate, right? Fructose 6 phosphate. Now coming on to the next part बेटा, fructose 6 phosphate से start करते हैं। हाँ, now you already know fructose 6 phosphate मैंने छोड़ा हुआ है। Now this fructose 6 phosphate, okay, so I will continue from here only. You already know we have fructose 6 phosphate. Don't write this because you have already written this. Just to have a continuation over here, remember beta, fructose 6 phosphate, okay, I'm again writing this. You already know it is 6 carbon, fructose is also 6 carbon, and it is containing phosphate group at the 6th carbon. Now this will again convert, okay, this will again convert beta, okay, again one phosphate will be added, again one phosphate will be added, and this will become fructose 1,6 biphosphate, okay, fructose 1,6 biphosphate. Now when I say again ATP will be used, okay, again ATP will be used, again phosphate will be added, so that phosphate, it will come from the ATP, it will come from the ATP, okay, and that ATP will be broken down to ADP, so that whatever phosphate is there, it can add to the fructose, it can add to the fructose. So you already know we have 6 carbons in fructose, we have 6 carbons in fructose, and at the 6th carbon already phosphate was there. Now beta see, first carbon also will have phosphate, and that phosphate, it is coming from ADP. So it is fructose. At first carbon also phosphate is there, at 6th carbon also phosphate is there. Two places phosphate is there, it is called biphosphate. It is called biphosphate. So fructose 1,6 biphosphate. Fructose 1,6 biphosphate. Over here again beta, an ion will be used, that is magnesium 2 plus ions. Yeah, magnesium 2 plus ion. Again I'm transferring one phosphate to another molecule. I'm transferring phosphate from ATP to fructose. So beta tell me which enzyme will be used. खुद ही एंजाइम का नाम बता दो, अब मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, खुद ही एंजाइम का नाम बता दो, कौन सा एंजाइम यूज होगा जो एक मॉलिक्यूल से फॉस्फेट को हेल्प करता है टू ट्रांसफर टू अदर मॉलिक्यूल। चलो अभी बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया, यूज योर ब्रेन्स बेटा, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस। यस राजवी, वेरी गुड बेटा, इट इज काइनेस, मैंने और कुछ यूज ही नहीं किया, काइनेस, वेरी गुड। यस, काइनेस काइनेस, वेरी गुड। तो तुम सारे स्मार्ट हो गए हो, तो तुम लोग को पता चल गया कि यहाँ पे काइनेस यूज होगा, ठीक है। देखो बहुत इजी हो जाता है एंजाइम्स याद करना ना, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज है तो आपको पता चल जाएगा। अब क्योंकि फॉस्फोट वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपको पता है फॉस्फेट ट्रांसफर कर रहे हैं, सो इट विल बी फॉस्फो। और क्योंकि ये फ्रक्टोज है बेटा, तो इसलिए इस पे स्पेशल नाम लिख देते हैं, इसमें इसलिए स्पेशल नाम लिख देते हैं, इट इज फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस। क्या ये क्लियर है?
क्या ये क्लियर है? अब मुझे फटाफट से बताओ, दिस इज एन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल स्टेप। चलो जल्दी से बताओ, इट इज अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल स्टेप। चलो फटाफट से आंसर दे दो। हर्ष ठीक है, आशीष ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो मुझे, इट इज अ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल स्टेप। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होगा बेटा, एटीपी यूज हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। आई मीन रिमेंबर बेटा, इट इज एन, या चलो वेरी गुड, एवरीवन इज राइट। उस्मान, राजवर्धन, राउती, जयनाम, वेरी गुड बेटा। आशीष, राजवी, वेरी गुड। इट इज एन, किरण, वेरी गुड बेटा, इट इज एन irreversible step. So this step, okay, so yeah, this is an irreversible step, irreversible step. Okay, now this enzyme beta, it is called as the rate limiting enzyme of glycolysis. Rate limiting enzyme. Okay, this enzyme decides whether the reaction will take place. Okay, okay, so yes, it is the committed step of glycolysis. Okay, it is the committed step of glycolysis, because fructose 1,6 biphosphate can only enter into glycolysis. So that's why इसको कहते हैं bottleneck of pathway. Bottleneck of pathway. अब तो सर जो है वो फंस चुका है बॉटल के अंदर, तो अब इसको बॉटल के अंदर आना ही पड़ेगा और कहीं नहीं जा सकता। ओके, यस। हाँ बेटा देखो, हम फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, सो या ओवर हियर यू कैन से लाइक दिस एज वेल। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हमारा पहला जो है पार्ट वो कंप्लीट हो जाता है, दैट इज स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन। तो स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन में बेटा आपको चार चीजें याद रखनी है। ओके, आपको चार चीजें याद रखनी है स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन में कि हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। आई होप स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज क्लियर। आई होप स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज क्लियर। आपने देखो क्लास 11th में भी पढ़ा था। देखो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और क्लिनिकली ओरिएंट करके पढ़ रहे हैं, मैं तो तुम्हें हर एक चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आई होप वही साइकिल है, पर इसमें बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें जो मैं ऐड कर रहा हूँ, आई होप इट्स लाइक वे क्लियर टू यू पीपल। रटने की जरूरत नहीं है, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैंने बताया काइनेज है, तो अब काइनेज याद रहेगा ना तुम्हें, अब काइनेज याद रहेगा। आइसोमरेज है कि चलो सेम फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ओनली स्ट्रक्चर इज चेंज, तो आइसोमरेज यूज होगा। ठीक है, so yes, I hope I'm making things easier for you people. This is like the least I can do for you people. I'm making it very very easier for you people now. ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन। स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन क्लियर हो गया। तो प्रिपरेटरी फेज में हमारा स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन यूज हो गया, और मैंने बोला था यहाँ पे एटीपी यूज होती है, तो एटीपी यूज होती हुई दिखाई दी। अब मुझे बता दो अभी तक कितनी एटीपी यूज हो चुकी है, हाउ मेनी एटीपीज आर यूज्ड टिल नाउ, टिल दिस रिएक्शन, हाउ मेनी एटीपीज आर यूज्ड? फटाफट से आंसर दो जल्दी से। I want an answer from everyone in the chat box. Tell me how many ATPs are used till now. Usman says two. Harsh, very good. Priti, Jainam, Razavi, Defaulter, Ashish, very good beta. Two ATPs are used. Two ATPs are used. अभी एटीपी तो जनरेट हुई नहीं, क्योंकि पहले वाले फेज में मैंने बताया था एटीपी यूज होगी ताकि ये बाद में और एटीपी जनरेट कर सके। तो स्टेज ऑफ फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं स्टेज, क्योंकि इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे थे, फॉस्फेट ऐड कर रहे थे, फॉस्फेट ऐड कर रहे थे। यस, यस, राउडी, शुभांगी, राजवर्धन, किरण, आशीष, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। या चलो आंसर करते रहना चाहिए, आंसर आना चाहिए बस। अब आ जाओ सेकंड सेकंड स्टेप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग रिएक्शन। तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो मैं यहीं पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज द स्प्लिटिंग रिएक्शन। ये सेम कंटिन्यू करना है बेटा, यू हैव टू कंटिन्यू द सेम साइकिल, splitting reaction. Now, this fructose 1,6 biphosphate beta, this fructose 1,6 biphosphate will break down into two compounds. Now, you already know
The two parent carbohydrate which I have taught in the first lecture, the two parent carbohydrate. I want the name of these two carbohydrates that were formed from polyhydroxy alcohol. One was aldehyde and one was keto derivative. जल्दी से बताओ, क्योंकि फ्रक्टोज भी क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ये जब ब्रेक होगा तो कार्बोहाइड्रेट ही बनेंगे। तो फटाफट से उसका आंसर बताओ। जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि दो कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बनाकर दिखाए थे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से। हम्म। चलो वेरी गुड बेटा। रिमेंबर बेटा, एक तो हमारा देखो, फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन है। फ्रक्टोज में कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ये ब्रेक हो जाएगा 3 3 कार्बन में, ये ब्रेक हो जाएगा 3 3 कार्बन में, राइट। इट विल ब्रेक डाउन इनटू 3 3 कार्बन। सो यस यू ऑलरेडी नो। एक तो हमारा है ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड डेरिवेटिव लगा था बेटा, ग्लिसरेल्डिहाइड। और या एक था हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। याद है ये दोनों मैंने करवाए थे। आई होप एवरीवन रिमेंबर्स, आई हैव डिस्कस्ड दीस टू, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब बेटा एक फॉस्फेट आ गया इधर और एक फॉस्फेट आ गया इधर, तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। yes, dihydroxyacetone phosphate. And yes, remember glyceraldehyde 3 phosphate, glyceraldehyde 3 phosphate। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 कार्बन का है और थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे भी क्या लगा हुआ है, या फॉस्फेट लगा हुआ है। इसका इतना यूज नहीं है इसलिए हम इसको या चलो। अब देखो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है बेटा। रिमेंबर दिस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट will convert into, okay, and it's a reversible reaction, and you will tell me the name of the enzyme, you will tell me the name of the enzyme। इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है। we have the same molecular formula, we have the same molecular formula। या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यस राजवी वेरी गुड, जयनाम वेरी गुड, तुम एक्सपर्ट हो गए हो सारे यार। तो yes, that is something that is called as isomerase beta, that is something which is called as isomerase। very good, very good, Kiran Yadav, Jainam, very good beta। so remember beta, we have yes isomerase, isomerase, and this dihydroxyacetone phosphate will change into, yeah, it will change into glyceraldehyde 3 phosphate, yes, and it is nothing special name given because it is phospho, it is phospho ट्रायोस। ट्रायोस बेटा क्यों, क्योंकि 3 ही कार्बन है ना, ये ट्रायोसिस में आते हैं। फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेस, फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेस, फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेस। अब dihydroxy acetone phosphate will get converted to glyceraldehyde 3 phosphate। so tell me how many molecules, okay, of glyceraldehyde 3 phosphate will be there now। tell me how many molecules of glyceraldehyde 3 phosphate will be there now, जल्दी से बताइए। yes, defaulter very good beta, 2 rose raspberry very good beta, it is, yeah, we have the 2 molecules beta, perfect, perfect beta। we have the 2 molecules now of glyceraldehyde 3 phosphate। तो अब जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो 2 molecules के हिसाब से होगी। अब जो भी कैलकुलेशन होगी that will be on the basis of 2 molecules, that will be on the basis of 2 molecules, right। so yes, remember beta, it is a reversible step, it is a reversible step, okay, it is a reversible step, right, it is a reversible step। so yes, now once it has no, we have glyceraldehyde 3 phosphate, so we are done with the splitting reaction also, we are done with the stage of splitting also, we are done with the stage of splitting also। तो फटाफट से एक थम्स अप दे दो कि प्रिपरेटरी फेज क्लियर हो गया है।
प्रिपरेटरी फेज क्लियर हो गया, जल्दी से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में इफ द प्रिपरेटरी फेज इज क्लियर। यस जयनाम वेरी गुड, जयनाम वेरी गुड। सो यस preparatory phase is done. Harsh, Rajvardhan, Kriti, Usman, Ash, Kiran, Rajvi, very good beta. Rowdy, very good beta. So we have already done these two parts, right? We have already completed these two phases, right? Now coming on to the third part, that is the splitting reaction. That is the splitting reaction. I hope the things are like easy for you people to understand as of now. I hope the things are like quite easy for you people to understand. Yeah. चलो पे ऑफ फेज पढ़ेंगे। आप देखो अब एटीपी कैसे बनती है। अब पे ऑफ फेज स्टार्ट करेंगे, पे ऑफ फेज स्टार्ट करेंगे। ओके, पे ऑफ फेज, राइट, पे ऑफ फेज। यस, नाउ पे ऑफ फेज स्टार्ट करेंगे। Now remember beta, in the payoff phase, okay, in the payoff phase, the first reaction that you have to keep in mind, okay, this glyceraldehyde 3-phosphate, okay, I'll just use another ink, yeah. Now, this glyceraldehyde 3-phosphate, okay, will now change into beta 1,3 this phosphoglycerate, this phosphoglycerate, ओके। अब तुम कहोगे कि पहले सर थर्ड थर्ड कार्बन पर ही फॉस्फेट था, अब फर्स्ट कार्बन पर भी फॉस्फेट आ गया है, फर्स्ट कार्बन पर भी फॉस्फेट आ गया है, बट दिस, या but this phosphate beta, it is not coming from ATP, okay, it is not coming from ATP, this is an inorganic phosphate beta, this is an inorganic phosphate, okay, that is an inorganic phosphate. And over here beta, remember this is an inorganic phosphate, it is not coming from ATP, okay, it is coming from the cell, okay. So this phosphate, it is an inorganic phosphate which is coming. And remember beta, the what is happening over here, that NAD plus is getting converted into NADH plus H plus, okay. So oxidation is taking place beta, NAD plus, it is getting converted into NADH plus H plus, and over here the enzyme which will be used, it is glyceraldehyde, just above me, 3-phosphate, and since, yeah, hydrogen is there, so yes, it is dehydrogenase, dehydrogenase, okay, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, okay. So that is something that you have to remember. Now coming on to the next step beta, so you already know we have, yeah, we have 1,3 by, okay, 1,3 bisphosphoglycerate, bisphosphoglycerate. Now what will happen beta? Now this 1,3 bisphosphoglycerate, okay, I've just copied the last one over here. I've just copied the last one over here. 1,3 bisphosphoglycerate will convert into 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate. It means that one phosphate is lost. It means that one phosphate is lost, and that phosphate will be used by the ATP, okay, and that phosphate will be used by, sorry, the ADP, that is the adenosine diphosphate plus phosphate coming from here, okay, and it will form ADP, ATP, and it will form ATP.
adenosine triphosphate. And this process, it is called as substrate level phosphorylation. Okay, this is called as the substrate level phosphorylation. It is called as the substrate level phosphorylation, and it is the first place where the ATP is generated. It is the first place where the ATP is generated. You already know 1,3-biphosphoglycerate. It is like this. Okay, so from here this phosphate is getting, okay, utilized over here. ATP is combining with this phosphate to generate the energy currency of the cell, and that is called as the ATP. Now my question is, how many ATPs are formed in this reaction? How many ATPs are formed in this reaction? 1. हर्ष, मैं चाह रहा था तुम लोग ये गलती करो, मैं चाह रहा था तुम ये गलती करो। राजवी, कृति, डॉक्टर कीर्ति, जयनाम भी 1 लिख रहा है। बेटा मैंने अभी बताया था ना, मैंने अभी बताया था ग्लिसरेल्डिहाइड कितने हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ग्लिसरेल्डिहाइड के। तो ऑब्वियसली बात है 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट के, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और 3-फॉस्फोग्लिसरेट के भी कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। सो ऑब्वियसली बात है बेटा, ये अगर मैं कहता हूं इसके 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसके भी तो 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो कितनी एटीपी जनरेट होगी इस रिएक्शन में? 2 एटीपी, 2 एटीपी जनरेट होगी। हाँ, समझ में आया क्यों 2 एटीपी जनरेट हो रही है बेटा? समझ में आ गया क्यों 2 एटीपी जनरेट हो रही है? रीजन समझ में आया? बुक से रटना नहीं है, समझो इसको। चलो ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नाउ चलो, now beta, this 3-phosphoglycerate, okay, will convert into 2-phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate। now beta इसका मतलब क्या है? 3-phosphoglycerate का मतलब है कि थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट था। 2 फॉस्फेट का मतलब क्या है कि ये फॉस्फेट कहां शिफ्ट हो गया है? सेकेंड कार्बन पे, सेकेंड कार्बन पे शिफ्ट हो गया है। Now when there is shifting of, yes, when there is shifting of one phosphate, okay, from one carbon to another carbon in the same molecule, then an enzyme is used, then an enzyme is used, and that enzyme, it is called mutase beta. It is called mutase. Mutase means moving. यहाँ पे Okay, what is the difference between mutase and kinase? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, what is the difference between mutase and kinase? Kinase भी तो phosphate का ट्रांसफर होता है, kinase is also phosphate का ट्रांसफर, then what is the difference? So remember beta, mutase is moving phosphate group from one carbon to another in on same molecule, on same molecule. Yes बेटा, अगर मॉलिक्यूल सेम है, फॉस्फोग्लिसरेट ये बेटा मॉलिक्यूल चेंज थोड़ी किया है, तो एक ही जो ये फॉस्फोग्लिसरेट है उसके थर्ड पोजीशन से कहां शिफ्ट कर दिया? सेकंड पोजीशन पे। अगर मॉलिक्यूल एक ही है तो वहां पे म्यूटेस, अगर मॉलिक्यूल दो है, फॉर एग्जांपल एटीपी है एंड ग्लूकोज है, एटीपी इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, ग्लूकोज इज अ डिफरेंट मॉलिक्यूल, एटीपी से फॉस्फेट ट्रांसफर होता है ग्लूकोज में, वी हैव 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो वहां काइनेज यूज होगा। और जहां पर सेम मॉलिक्यूल वी आर यूजिंग, ओके, और उसमें सिर्फ हम कार्बन का नंबर चेंज करें तो दैट इज म्यूटेस। I hope this is clear to each one of you. I hope this is clear to each one of you. जल्दी से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, I hope this is clear to each one of you. चलो हर्ष, हाँ, पोजीशन चेंज, पर्सन चेंज, बिल्कुल जैनम, आज की सच्चाई बता दी है तुमने। डॉक्टर कीर्ति, वेरी गुड।
पोजीशन चेंज, पर्सन चेंज, इसका तो पता नहीं क्या ही मतलब निकालूं मैं। ठीक है। तुम लोग इतने मतलब, मैं कुछ बोल नहीं सकता, अगले दिन फिर ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी इंस्टा पे, तो इसलिए आई विल रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ एंड आई विल कंटिन्यू। ओके, आई विल कंटिन्यू, वरना ट्रोल करने लग जाता है फिर कि हाँ। खैर ये तुम्हारा कमेंट था जयनाम ना, इसलिए अब तुमने किस भावना के साथ, आई मीन किस इंटेंशन के साथ बोला है, ये तो तुम्हें ही मुबारक हो। ठीक है। अच्छा, तो अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बेटा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बनेगा फॉस्फो इनॉल pyruvate. Okay, phosphoenol pyruvate. Now over here beta, what will happen? A water molecule will be lost. नहीं नहीं जैनब, बिल्कुल मुझे कोई ऐसे, I'm just kidding यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। There should be some sort of entertainment as well, so it's too okay. Okay, so yeah, 2 phosphoglycerate से phosphoenol pyruvate. So what will happen? There will be loss of water molecule beta, and this step you have to remember. And this is, yes, yeah, this is called, okay, yeah, inhalation hai, and the enzyme used it over here, it is enolase. Enolase, whenever there is a water molecule remover, it is the enolase enzyme, right? Phosphoenol pyruvate. And yes, again the last step that you have to remember beta, we have the formation of pyruvate. We have the formation of pyruvate. अब यहां से फॉस्फो जो ग्रुप है, ओके, the phospho group, okay, it will be used by the ATP, it will be used by the ATP, okay, and sorry, ADP, and obviously what will be formed? ATP. And this is also called as the enzyme over here, it will be, okay, now which enzyme will be used? Which enzyme should I write over here? फटाफट से नाम बताओ एंजाइम का। फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम पायरुवेट टू, फ्रॉम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू एटीपी। काइनेज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड राजवी, वेरी गुड बेटा, इट इज काइनेज। और क्योंकि पायरुवेट है तो नाम हो जाएगा पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। Yes, very good. Everyone is right, right, right. Rowdy, Jainam, Usman, Kiran, very good. And this is something which is referred to as the substrate level phosphorylation. Okay, it is termed as substrate level phosphorylation. Okay, substrate level phosphorylation. In this reaction, how many ATP will be formed? फटाफट से बता दो, in this reaction how many ATP will be formed? चलिए फटाफट से बताइए, इन दिस रिएक्शन हाउ मेनी एटीपी विल बी फॉर्म्ड। अब ठीक बोल रहे हैं सब, देखो राजवी एक बार डांट दो तो अगली बार आंसर सही आने लगते हैं। राजवी, कीर्ति, हर्ष, ऐश, किरण, जयनाम, उस्मान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड राजवर्धन, वेरी गुड। अब सब पता चल गया, चलो वेरी गुड बेटा। अब देखो ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। अब ध्यान से देखोगे तो ग्लूकोज से क्या बन चुका है? पायरुवेट बन चुका है। तो ग्लूकोज से हमने पायरुवेट बना लिया, तो बधाई हो सबको कि हमारा पायरुवेट बनकर तैयार है। Yes, everyone is right. Yes, we have, like, the pyruvate has been formed. So just see, from glucose to pyruvate, this is the whole story that we have covered in 3 slides with all the important points. With all the important points, मैंने जो भी enzymes बताए हैं उसका आपको knowledge दिया है, ठीक है? Why, what is the function of that enzyme, and that is like same in every case. Okay, same function is in every case, right? Now, अब energy calculate कर लेते हैं। एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी एनर्जी मिल रही है, कितना एनर्जी यूज हुआ है, ठीक है? एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? ओके, एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, या चल। अब छोटी छोटी चीजें रह गई है, फटाफट से अब सबको कंप्लीट करेंगे। यस, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला बात बेटा आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम हम लोगों ने कौन कौन से यूज किए जहां पे एनर्जी मिल रही है। सो सबसे पहला एंजाइम है ग्लिसरेल्डिहाइड,
जहां पे एनर्जी मिल रही है, एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी कैलकुलेशन देखेंगे। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस G3PDH, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेस। बेटा मैकेनिज्म आप लोगों को पता है, मैकेनिज्म आप लोगों को पता है, इट इज NADH प्लस H प्लस मिला था, NADH प्लस H प्लस मिला था, यस NADH प्लस H प्लस मिला था। इफ यू जस्ट सी ओवर हियर बेटा, मैंने बताया था यहां पे अगर ध्यान से देखोगे दिस पर्टिकुलर रिएक्शन NADH प्लस H प्लस मिला था। अब मुझे फटाफट से बता दो कितनी एनर्जी, ओके कितने NADH मिल रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे, कितने NADH H प्लस मिल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे। राजवी ने आंसर कर दिया, बट आई वांट टू सी वेदर अदर्स आर एबल टू आंसर और नॉट। कितने NADH हम लोगों को मिलेंगे यहाँ पे? टू 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 टू, यस यस एवरीवन इज राइट। यस कीर्ति, अभी बाकी वो वाला पार्ट में अभी बताता हूँ तुम्हें, उसमें थोड़ी सी गलती है। या जैनम वेरी गुड। या सो रिमेंबर बेटा वी हैव 2 NADH प्लस H प्लस जो हमें मिलेंगे, 2 NADH प्लस H प्लस जो हमें मिलेंगे। तो रिमेंबर बेटा 1 NADH, ओके 1 NADH और H प्लस से हमें मिलते हैं 2.5, ओके 2.5 ATP। तो यहां पे हमारे कितने हैं? 2 NADH है, 2 NADH प्लस H प्लस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 इंटू 2, दैट इज 5 ATP, that is 5 ATP. So remember beta the number of ATP, it will be 5. The number of ATP, it will be 5. Second, second is okay, phosphoglycerokinase। अब आपको पता है ये एंजाइम हमने यूज किया था, यू ऑलरेडी नो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कितना नंबर ऑफ एटीपी मिलेगा? आई वांट द आंसर इन द चैट बॉक्स, आई वांट आंसर्स इन द चैट बॉक्स। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फटाफट से बताइए कितना मिलेगा? यस राजवी वेरी गुड बेटा, इट इज 2। हर्ष 2, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस। चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस। अच्छा मैंने यहाँ पे एंजाइम लिखा नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, इट इज फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस फॉस्फोग्लिसरोकाइनेस, ठीक है काइनेस ही है क्योंकि, हाँ ठीक है। So obviously there is removal of phosphate from one molecule to another. Yeah, from phosphoglycerate to ATP, it is phosphoglycerokinase. वो add कर लो. Yes, and everyone is right. We are getting 2 ATP in this reaction. Yes, we are getting 2 ATPs in this reaction. The third one beta, pyruvate kinase. जल्दी से बताओ pyruvate kinase में कितना ATP मिल रहा है? Pyruvate kinase में how many ATPs we are getting? It is same substrate level phosphorylation, and how many ATPs we are getting beta? It is 2 in number. It is 2 in number. Yes, Jainam Rajvi very good. Take Harsh Kirti very good beta, very good. Now अब कुछ ATPs यूज भी हुए थे, कुछ ATPs यूज भी हुए थे, तो टोटल ATP अगर मैं बोलूं, ओके अगर टोटल ATP मैं बोलूं तो ये कितने हो गए? 5 प्लस 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 प्लस 2 कितने हो गए? या 9 ATP हो गए, 9 ATP हो गए, बट ये टोटल ATP है। अब यूटिलाइज कितने हुए बेटा? अब you already know we have 2 more enzymes, okay hexokinase, the very first reaction, hexokinase और glucokinase, वहां पे हमने क्या किया था? एक ATP यूज किया था, वहां पे कितने? एक ही ATP यूज हुआ था ना, वहां पे कितने ATP यूज हुए थे? 1 ही यूज हुए थे। और तीसरा
फ्रक्टोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, और वहां पे भी हमने कितना यूज किया था 1 एटीपी, वहां पे भी हमने क्या यूज किया था 1 एटीपी। तो ऑब्वियसली बात है 9 - 2, तो नेट एटीपी गेन अगर ग्लाइकोलिसिस में पूछा जाए तो इट इज 7 एटीपी बेटा, इट इज 7 एटीपी, नेट एटीपी गेन इट इज 7 एटीपी। इतना क्लियर है सब लोगों को? फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर एक थम्स अप दे दो कि ये समझ आ गया सब लोगों को, जल्दी से एक थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में अगर ये पूरा एनर्जेटिक समझ में आ गया है तुम लोगों को। जयनाम, हर्ष, ऐश, रुंजान, राजवर्धन, कीर्ति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। उस्मान वेरी गुड, किरण वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, एनर्जेटिक्स हो गए। चलो इरिवर्सिबल रिएक्शंस बता दो कौन कौन से हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस बेटा तुम्हें पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल, देखो टोटल है 10 रिएक्शंस, टोटल है 10 रिएक्शंस, ओके। तो इसमें से 3 जो है वो इरिवर्सिबल है, 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस है, और 7 जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस है। 7 जो है these are reversible reactions, 7 are reversible reactions। तो irreversible कौन कौन से, irreversible कौन कौन से, रिमेंबर बेटा, पहला जो है हेक्सोकाइनेस या ग्लूकोकाइनेस वाला जो स्टेप है, ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन जो आप लोग यूज कर रहे हैं। सेकेंड इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ओके, जो थर्ड रिएक्शन है। और एक रिमेंबर बेटा जो लास्ट रिएक्शन है दैट इज पाइरुवेट काइनेस, पाइरुवेट काइनेस वाला जो है जो 10th रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन एंड 10th रिएक्शन। सो रिमेंबर दीज 3 आर इरिवर्सिबल, और बाकी जितनी बची हैं वो सारी रिवर्सिबल रिएक्शन। यस, नो बेटा, इट इज ओनली 3, इट इज ओनली 3, राइट, या it is only 3। rate limiting enzyme, I want everyone to answer the rate limiting enzyme, rate limiting enzyme of glycolysis। चलिए आंसर दीजिए फटाफट से चैट बॉक्स में, व्हाट इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस? या द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ये भी बताया हुआ है और अभी 3-4 बार यूज भी कर लिया है हम लोगों ने। रिमेंबर बेटा इट इज, यस कृति वेरी गुड बेटा, इट इज द फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेस, इट इज द फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1 लिखते हैं इसको, ठीक है। यस कृति सेठी उस्मान वेरी गुड, इट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1, इट इज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1। So yes, I hope this is clear to each one of you as of now, I hope this is clear to each one of you as of now। चल ये क्लियर हो गया, फटाफट से एक थम्स अप दे दो इफ इट इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। यस बेटा कौन सा पूछ रहे हो आप? राजवी देख लो बेटा एक बार, ये वाली स्क्रीन देख लो, या हम्म, हाँ बेटा वो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है बेटा, रिवर्सिबल है, ठीक है, इट इज रिवर्सिबल, राइट, इट इज रिवर्सिबल। हम्म, 3 ही है बेटा, मैंने उसकी आपको दे दी है, ठीक है, 3 ही रिएक्शंस हैं जो मैंने आप लोगों को दे बता दिया है, ठीक है। सो आई होप दिस इज वे क्लियर टू ईच वन ऑफ यू राइट नाउ, या now inhibitors of glycolysis, inhibitors of glycolysis, inhibitors of glycolysis, रिमेंबर बेटा इसमें भी लिस्ट है, तो सबसे पहली लिस्ट आपको याद रखनी है फ्लोराइड, फ्लोराइड इनहिबिट्स इनोलेस। हमेशा ध्यान रखना बेटा अगर मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूं, रिमेंबर इफ इट इज इनोलेस इट इज गेटिंग इनहिबिटेड बाय
इस एंजाइम की फंक्शनिंग कम हो जाती है विद द यूज ऑफ फ्लोराइड, ओके, विद द यूज ऑफ फ्लोराइड। सो अगर फ्लोराइड इसको इनहिबिट कर देगा तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद रिएक्शन नहीं होगी, ओके, 2-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद रिएक्शन नहीं होगी। सो यस, दीज आर द इनहिबिटर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट यू हैव टू रिमेंबर। Secondly, you have to remember, beta. Yes, you have to remember. Yeah, iodoacetate and fluoride inhibits enolase. This has been asked in the FMG exam multiple number of times. This has been asked in the FMG exam multiple number of times. Iodoacetate, iodoacetate. Basically, it inhibits glyceraldehyde 3-phosphate. It is inhibiting glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. This is again a compound. And remember, yeah, arsenate, arsenate inhibits. बल्कि अगर तुम साइकिल में ऐड कर दोगे, अगर साइकिल में if you are having space, please add it on over there itself. Arsenate inhibits 1,3 biphosphoglycerate, bisphosphoglycerate kinase. Okay, phosphoglycerate kinase or 1,3 bisphosphoglycerate kinase, right? So that is about the inhibitors of glycolysis. Coming on to the regulation of glycolysis. Yeah, regulation of glycolysis. So I want to ask you, regulation, glycolysis will take place, beta. Now you are going to answer me, it will take place in the fed state or the fasting state. ये कब रेगुलेट होगी कि जब तुम फास्टिंग कर रखी है तुमने या तुम फेड स्टेट में हो, कब ग्लूकोज से एनर्जी बनेगी? चलो जल्दी बताओ आंसर फटाफट। कब ग्लूकोज से एनर्जी बनेगी, फेड और फास्टिंग स्टेट? चलो, एवरीवन इज राइट। यस, कृति, उस्मान, किरण, राजवर्धन, हर्ष, मेडिक्योर, वेरी गुड बेटा। सो रिमेंबर बेटा, ऑल रिमेंबर इफ वी टॉक अबाउट द हार्मोनल रेगुलेशन, hormonal regulation beta. So remember beta, it will take place in the well fed state, okay, it will take place in the well fed state. Secondly, under which hormone? Yes, under which hormone it will take place? Yes, it is insulin. I have already discussed this. It is insulin beta, it is insulin. Okay, now again, yeah, and remember beta, these some of the enzymes, they are activated in dephosphorylated state, dephosphorylated state. Now when I say dephosphorylated, मतलब उसमें फॉस्फेट नहीं लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है तभी तो फॉस्फेट वाले एंजाइम्स जो है, फॉर एग्जांपल हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज तभी एक्टिवेट होगा ना बेटा। You already know phosphofructokinase 1, okay, or you already know pyruvate kinase. These enzymes will only be active when there is a dephosphorylated state. तभी तो ये एंजाइम्स एक्टिव होंगे, तभी तो फॉस्फेट लगेगा। अगर पहले ही फॉस्फेट लगा होगा तो ये एंजाइम्स का कोई काम ही नहीं है, राइट? सो यस, secondly, remember beta, we have, yeah, we have one more regulation that you have to remember. It is called as allosteric regulation. It is called as allosteric regulation. Okay, इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि सबस्ट्रेट से हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ओके, सबस्ट्रेट जो है इट फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, substrate favors forward reaction and product inhibits forward reaction. ऑब्वियसली बात है ना बेटा, ऑब्वियसली बात है, एक लिमिट के बाद, ओके, जब पायरुवेट बन जाएगा, ओके, ठीक है, तो एक्सेस पायरुवेट ना हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट जो है एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस रिएक्शन को स्टॉप करेगा कि हाँ जितनी नीड थी उतनी मिल गई है। सबस्ट्रेट तो जितना है वो तो आगे चलाता जाएगा, बट प्रोडक्ट इज द वन, जब उसके लेवल्स बढ़ेंगे तो वो इनहिबिट करेगा, वो इनहिबिट करेगा, राइट, राइट, ओके। नाउ
अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल इफ यू जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यू आर ऑलरेडी अवेयर ग्लूकोज क्या है हमारा, सबस्ट्रेट हो गया, ग्लूकोज क्या है, सबस्ट्रेट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, प्रोडक्ट हो गया। So you already know product will inhibit, okay, will inhibit, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हमारा प्रोडक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनहिबिटर हो जाएगा, और सबस्ट्रेट हमारा क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, तो ये फेवर करेगा, ओके, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विल बी द इनहिबिटर पार्ट, राइट। और इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस, राइट। चलो इतना क्लियर है सब लोगों को, इतना क्लियर हो गया सब लोगों को, फटाफट से एक थम्स अप दे दो इफ द रेगुलेशन इज क्लियर, इफ द रेगुलेशन इज क्लियर, फटाफट से एक थम्स अप दे दो, जल्दी से एक थम्स अप दे दो इफ द रेगुलेशन इज क्लियर। हर्ष, ऐश, कृति, कीर्ति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जयनाम वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो बेटा, अब इसमें एक चीज और समझनी है, एक चीज और समझनी है, दैट इज द क्लिनिकल कोरिलेशन, ओके, क्लिनिकल कोरिलेशन, उसकी स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया तो अभी मैं इसको अलग से लिखवा देता हूँ। क्लिनिकल कोरिलेशन क्यों पढ़ रहे हैं भैया इसको, क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, रिमेंबर बेटा, इफ देयर इज, पहला लिखो, पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी, पाइरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी बेटा, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन, एमसी मतलब मोस्ट कॉमन है बेटा, कुछ और नहीं है एमसी, इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन enzyme deficiency in humans, okay, it is the second most common enzyme deficiency in humans, okay, enzyme deficiency, और अगर ये enzyme deficiency है तो it will lead to hemolysis, it will lead to hemolysis, okay, now if there is phosphofructokinase 1 deficiency, so yes, it will lead to muscle fatigue, skeletal muscles जो होते हैं ना, the muscles which are attached to the bone, skeletal muscle fatigueness beta, skeletal muscle fatigueness, and that all comes under glycogen storage disorders, that all comes under glycogen storage disorders, that all comes under glycogen storage disorders beta. So I hope it is clear to each one of you that today's lecture beta, the today's lecture I have started with the glycolysis, I have discussed the concept, the significance, why glycolysis is essential, okay, what are the sites and the organelles, right, overview I have given, the steps, all the steps I have discussed in detail with all the enzymes and everything beta. So energetics, clinical correlation, energetics I have discussed, how much ATP will you get in aerobic glycolysis, yeah, irreversible reaction, okay, rate limiting enzyme, inhibitors, regulation. So all parts are like I did. So next topic beta I will be starting with tomorrow I will be taking up, yeah, okay, I will be taking up anaerobic glycolysis. Today we have discussed aerobic glycolysis, and along with anaerobic glycolysis, I will be discussing, yeah, citric acid cycle in detail, okay, with clinical correlation. Yes, I hope, yeah, the topic is clear to each one of you, beta. Just give me a thumbs up in the chat box if the topic is like clear to each one of you, so that, yeah, I'm aware that, yeah, Rajvi beta, the class is daily at 6:30 p.m. Right? The class is daily at 6:30 p.m. And tomorrow morning I will be starting up with lower limb beta. And tomorrow morning I will be starting up with lower limb. So I want everyone to attend the session tomorrow. I want everyone to attend the session tomorrow in the morning. I will be starting with the anatomy of the lower limb with basics. बहुत basic से पढ़ाऊंगा कि आप लोग को सब समझ में आए. ठीक है? From scratch I will start. Right? तो चल ठीक है बेटा, गुड बाय, गुड बाय, या लोअर लिम इन द मॉर्निंग 11:30.
In the morning 11:30. Very good, Usman. Very good.